Everyone, hope all of you are fine and started your studies. Am I right or wrong? ना का तो कोई सवाल ही नहीं बनता. I know and believe that all my dear ones have completed their 3 grammar chapters in their ACE grammar book of standard 4th. Today we are going to start with chapter number 4, that is countable and uncountable nouns from your ACE grammar book of standard 4th. So ready students? Okay. Before we proceed further with the chapter lesson number 4, countable and uncountable nouns, let's revise chapter number 1, noun, chapter number 2, common noun and proper noun, and chapter number 3, collective nouns. So first of all students, tell me what are nouns? Very good students. Correct. Nouns are words which are used as name of person, animal, places and thing. Clear students? Again, what are nouns? Nouns are the words which are used as the name of person, animal, place and things. Now here so many examples can be given. The few examples are Suraj, goat, school, bag, table, boy, office, etc. All these are nouns. Now in the second chapter, we have learnt about common noun and proper noun. This is the chair, horse, girl. So all these are nouns. Correct students? Now in the second chapter, we have learnt about common noun and proper noun. So students, tell me, what are common nouns? Very good, excellent. Common nouns are the name of people, animal, places or thing of the same kind. Example can be like this. We can say chair, any animal or bird can be there, horse, parrot, girl, computer, laptop, etc. So all these are common noun which we talk about in common. Clear students? Very good. So all the students are knowing what will be my next question? Yes, you are correct. My next question is there, okay, what are proper nouns? So proper nouns are the special name of people. This everyone is knowing who is there, the name of a specific person. Then name of any animal, festival, place or thing. So here Holi is there, it is the name of a specific festival. So it is a proper noun. Again, what are proper nouns? Proper nouns are the special name of people, places, animal or thing. Example can be there, we can say Salman Khan, Narendra Modi, like these special names are there. Then here Holi festival is there, it is the name of a specific festival. So still we can see some more example, Himalayas, so it is one of its kind. So that is also a proper noun. So now I think all my students are clear with all the 3 chapters, noun, common noun, proper noun and collective nouns. So now today
Collective nouns, so we have studied in both the books, Ace Grammar also, and we have studied in the textbook of textual exercise also. So that is clear. When we talk about the group of people in common, so here so many people are together, so we can say the crowd of people. So it is a collective nouns. So many examples can be given, like the bunch of grapes, then bunch of keys, pack of cards, like this. So when we talk about the things as a unit or as one, that is called a collective noun. So you know that all these are nouns, and today we are going to study chapter number 4, that is countable and uncountable nouns. So this is also one kind of noun, countable and uncountable noun. From the name itself, it is obvious that the things which can be counted are called countable nouns, and the things which cannot be counted are called uncountable nouns. Now let's see the lesson in detail. So for that, first we have to read the sentence which is given on page number 11. So here it is there. Read these sentences. What is the first sentence? The boy has 3 toys. Boy के पास कितने खिलौने हैं? 3. Number is specified, so we can count it. So you know it is a countable noun. Second, I drink some milk. Milk we cannot count. Only what we can count? If the milk is there. If bottle of milk is there, that can be counted, or liter of milk is there, that can be counted. But milk alone itself cannot be counted. Come on, we will understand it still in detail. Here, in the first sentence, the word in the bold tell us about the number of toys. Okay, here it is specified how many toys are there? 3. 3 toys are there. Therefore, toy is a countable noun. Toy is a noun, and so toy is a countable noun. Now for countable nouns. Now in the second sentence, what is there? The word in the bold tell us the quantity, कि कितने प्रमाण में है. Tell us the quantity of milk, and milk cannot be counted, so it can, as it is known as uncountable noun. अगर हम उसे बॉटल होता कि बॉटल ऑफ मिल्क और लिटल ऑफ मिल्क, दैट कैन बी काउंटेड, मगर मिल्क अकेला, दैट वी कैनॉट count, so it is an uncountable noun. Now let's understand in detail about countable nouns. What are countable nouns? तो हम definition देख लेते हैं. Countable nouns are the nouns that can be counted using numbers. Countable nouns क्या होता है? जिसे हम काउंट कर सकते हैं नंबर का यूज़ करके. We use an, a और n before singular countable nouns. अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से होता है तो उसके आगे हम ए और एन आर्टिकल लगा सकते हैं. काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म. उसमें हम प्लूरल फॉर्म भी हो सकता है. सिंगुलर इज ए वन विल बी देयर. ज़्यादा होगा तो हम उसमें प्लूरल फॉर्म एस, ई एस, आई एस, दैट वी हैव टू पुट टू मेक इट प्लूरल. एंड काउंटेबल नाउन्स को हम कैसे वो कर सकते हैं? वी यूज़ हाउ मैनी फॉर काउंटेबल नाउन्स. अगर हमें कुछ जानना है तो उसको क्वेश्चन हम कैसे पूछेंगे कि हाउ मैनी बुक्स यू आर हैविंग इन योर बैग. तो क्वांटिटी हमको उससे जाननी है. सो विच क्वेश्चन वी हैव टू आस्क? हाउ मैनी. तो वी यूज़ हाउ मैनी फॉर काउंटेबल नाउन्स फॉर आस्किंग द क्वेश्चन. देन नेचुरली वी विल गेट द आंसर. सो अगेन वन टाइम मोर. व्हाट आर काउंटेबल नाउन्स? Countable nouns are the words or objects that can be counted at separate unit using numbers. Clear, students? Okay. Come on, we will move on to the next part. See here, example is given. Here, bottle of milk is there, so it can be
counted. Glass of milk is there, it can be counted. मगर ये अकेला दूध होगा तो in the vessel, in the pan, it cannot be counted. Now, plural form of countable nouns. We add s, es, ies to the countable nouns when we write the plural form. हमें जब उसका प्लूरल फॉर्म लिखना है तो हम इसमें एस, es और ies लगाना होगा. Here examples are given. A plum, here it is there. और उसको हमें 3 plums दिखाना है. So it will come 3 plums. हमने वहाँ पीछे s लगाया. So now it is in plural form. Second, a glass. So only one glass is there. If we want more glass 5, तो it will come glasses. यहाँ पे s है, so it will come es. Plural form it will take glasses. A glass, plural form 5 glasses. Next one, a butterfly. So if more is there, so it will come 2 butterflies. So this is the plural form. Like this it will take s, es or ies will add to the countable noun, then it will become in plural form. See here, butterfly is singular, so we can say a butterfly. But if more is there, then it will become butterflies. Now about the uncountable nouns. Uncountable nouns are nouns that cannot be counted using numbers. हम उसको नंबर यूज़ करके काउंट नहीं कर सकते. They do not use an, a और n before singular countable nouns. उसमें आर्टिकल a और n नहीं लगता. Uncountable nouns do not have plural form. उसका plural form भी नहीं होता. So here few examples are given. Few I have also written, so it will be clear for you. Honey, water, butter, sugar, chocolate, rice. Paint, jam, money, oil, milk, chicken. Bread, tea, salt, flour, meat. ये सारे uncountables nouns है which we cannot count. मगर इसको हम किसी बॉटल में डाल देंगे, किसी जार में डाल देंगे, तब वो काउंट हो सकता है. मगर if it is separate, so it cannot be counted. So these are uncountable nouns. हम uncountable nouns को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं. What are uncountable nouns? तो uncountable nouns are substance or concept that cannot be counted or divided into separate elements. We cannot count them. Examples, so we have seen that these are the examples. Now we use how much for uncountable nouns. अब हमें कुछ क्वेश्चन पूछना है कि how much flour you want. आपको कितना आटा चाहिए, तो that time we have to use the question how much. काउंटेबल के लिए how many था and for uncountable how much. कि how much honey is left in the bottle. कि बॉटल के अंदर कितनी हनी बाकी है. So we will ask the question with how much. And जो uncountable nouns है, they do not take the plural forms. And still, चलो, now we'll move further with some more understanding for better. Yes. Now we must use other countable nouns to measure uncountable nouns. अगर हमको उसको काउंट करना है तो उसके लिए काउंटेबल नाउन्स का यूज़ करना पड़ेगा. कैसे? पहले हनी, दैट इज़ अनकाउंटेबल. अब मगर हमने उसमें जार लगा दिया, सो नाउ इट हैज़ बिकम काउंटेबल. ए जार ऑफ हनी, तो ये हम काउंट कर सकते हैं कि कितने बॉटल है हनी के. सेकेंड वन, ए कैन ऑफ पेंट. तो जब हम घर कलर करवाते हैं तो बड़े डब्बे के डब्बे कैन आते हैं, सो दैट वी कैन काउंट. So it is a can of paint. It has become now countable noun. A loaf of bread. Bread का एक पीस, टुकड़ा. So that is also countable nouns. Now अब जब हमने इसमें ये लगा दिया loaf,
कैन, जार लगा दिया, तो अब हम इसको प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। कैसे? लेट्स सी। इन केस ऑफ प्लूरल्स वी राइट इज़ एट। कैसे लिखेंगे देखते हैं। अभी यहाँ पे सिंगुलर है, ए जार ऑफ हनी, तो हम यहाँ पे 2 जार्स ऑफ हनी, या अनकाउंटेबल में एस नहीं लगाना है, यहाँ पे जार्स में हम लगाएंगे। सो काउंटेबल में हमको एस लगाना है। 2 जार्स ऑफ हनी, तो अब ये काउंटेबल हो गया। ए कैन ऑफ पेंट, सो इट कैन बिकम लाइक दिस 5 कैन्स, इसका हमने प्लूरल फॉर्म किया 5 कैन्स ऑफ पेंट। ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? 3 स्लाइसिस ऑफ ब्रेड। व्हाट विल बी देयर? 3 स्लाइसिस ऑफ ब्रेड। अंडरस्टूड कि जब हम काउंटेबल नाउन में एस लगा सकते हैं, अनकाउंटेबल में वी कैन नॉट पुट एस। सो I think all the students are clear with countable and uncountable nouns. Now let's turn on to page number 12. Here few more examples are there that we will see. We can use much, a little, a lot of, some and any with uncountable noun टू शो क्वांटिटी। हमें दिखाना है कि उसमें कितना प्रमाण है। सो दिस क्वांटिफायर्स वी हैव टू यूज़। इसको क्या बोलते हैं? क्वांटिफायर्स। तो वी यूज़ क्वांटिफाइबल वर्ड्स सच एज मच, सम, ए लिटल, ए लॉट ऑफ, सम, एनी बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स टू क्वांटिफाई देम। यानी ये वर्ड यूज़ करके हम बता सकते हैं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ थिंग इज़ देयर इन द वेसल और इन द प्लेट एनीवेयर। फिर से देख लेते हैं। वी यू कैन यूज़ मच, ए लिटल, ए लॉट ऑफ, सम एंड एनी with uncountable nouns to show the quantity. Now here examples are given that we'll see. We had some curd in the afternoon. हमने दोपहर में थोड़ा कर्ड खाया, तो उसको हमने मेज़र नहीं किया, सो थोड़ा, सो वी हैव टू वांट टू शो के लिटल वी हैव इटन, सो इट इज़ देयर सम. नेक्स्ट वन, रीटा हैड अ लॉट ऑफ जूस लास्ट इवनिंग. रीटा ने लास्ट शाम को बहुत सारा जूस पिया. सो हियर ए लॉट ऑफ, एग्जैक्ट मेजरमेंट वी आर नॉट नोइंग, सो ज़्यादा पिया, सो इट विल कम ए लॉट ऑफ. वी प्लेड अ लिटल म्यूज़िक एट द पार्टी. हमने थोड़ा म्यूज़िक बजाया, सो ए लिटिल. वी प्लेड a little music at the party. Now someone is asking the question, is there any rice left? क्या आपके घर पे थोड़ा भी राइस बाकी है? So is there any rice left? It cannot be counted. The well doesn't have much water. इस कुएं में ज़्यादा पानी नहीं है. So enough water is not there so much. The well doesn't have much water. There are few more examples. Let's see them also. Sometimes we use some, a few, many, any and lot of with countable nouns when we do not know the exact number. जब हम exact number नहीं पता होता है तो ये quantifiers भी हम use कर सकते हैं. कौन से? some, a few, many, any और a lot of. Let's understand better with the help of example. There were a few apples on the trees. तो यहाँ पे trees के ऊपर थोड़े apples थे. So that is a few. We have some biscuits in the tin box. हमारे tin box के अंदर थोड़े biscuits है. So here quantifier some is used. There are a lot of books in the library. लाइब्रेरी में तो होती ही है. Yes. So there are a lot of books in the library. There are many shells on the seashore. दरिया किनारे जो shells होते हैं बहुत सारे होते हैं. So there are many shells on the seashore.
नेक्स्ट वन, देयर आरंट एनी शूज़ ऑन द रैक. रैक पे एक भी शूज़ पड़े नहीं है. सो देयर आरंट एनी, एक भी नहीं है. सो इट विल कम एनी. देयर आरंट एनी शूज़ ऑन द रैक. Now the last part of explanation, let's see. We use the before uncountable nouns only when the thing being referred are to specific and not general. जब हमें बताना है कि हम उस चीज़ के बारे में ही बात कर रहे हैं. आपको पता ही है आर्टिकल द, जब हम कोई भी चीज़ स्पेसिफिक बता रहे होते हैं, दैट टाइम द आर्टिकल द इज़ यूज्ड. तो हियर ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन में भी सेम रूल इज़ देयर कि जब हम कोई भी चीज़ स्पेसिफिक उसके बारे में ही बात कर रहे हैं, दैट टाइम इट विल कम द. सो हियर इट इज़ द मिल्क इज़ इन द फ्रिज. तो पता है हम मिल्क के बारे में ही बात कर रहे हैं, वो स्पेसिफाइड है. सो इट विल कम द मिल्क इज़ इन द फ्रिज. लास्ट वन, वार्म सम मिल्क फॉर द कैट. तो हम किस कैट के लिए कह रहे हैं वो स्पेसिफाइड नहीं है. सो हियर इट विल डायरेक्टली कम कि थोड़ा सा दूध गर्म कर दो फॉर द मिल्क. ये जनरल में यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल इज़ नॉट यूज्ड. I think all my students have understood what is countable and uncountable nouns. Yes, very nice students. तो अब थोड़ा और अच्छे से समझना चाहते हैं तो लेट्स सी एन एनिमेटेड वीडियो रिलेटेड टू द सेम, ताकि अगर आपको कोई थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो तो वो आपका क्लियर हो जाए अच्छे से. सो नाउ विल सी द एनिमेटेड वीडियो रिलेटेड टू countable nouns and uncountable noun. Nouns, countable and uncountable. Countable nouns have plural forms. For example, spoon, spoons, student, students. Uncountable nouns do not have plural forms. For example, snow, snow, flower, flower, jam, jam. Countable nouns are objects that can be counted as separate units using numbers. For example, 2 spoons, 6 students. Uncountable nouns are objects that cannot be separated and counted individually. We use quantifiable words such as much, some, or a little before uncountable nouns to quantify them. For example, much snow, some flour, a little jam.